friends, and welcome to the today's session of Monday of Market Morning Session. First of all, I wish everyone today as a Festival of India. We have different festivals in different parts of the country. So wish you all a very happy Bihu, a very happy Lori, a very happy Makar Sakranti, and a very happy Pongal. I may missed out of on some other state festivals as well, but I am sure today is festival day in most part of our country. So wish you all have very successful trading and investing with Unlock Market Secrets. As you all know, we are trying to present you daily opportunity to trade and earn consistently, and then invest that money in wealth creation through equity and stock market. So let me take you directly to today's. Before I take you, first of all, there's a disclaimer. Please go through the screen that I'm not a SEBI registered technical analyst. This video is purely for education purpose. I share my screen, how any stock or any index is giving a trade opportunity during the day, and based on the candlestick pattern and the price action behavior, I suggest that these are possible trades which we can take. So if you take any trades, take it. It is purely entirely at your risk. There's no, I don't take any responsibility for your profit or your loss. My aim is to give you opportunities. My aim is to try and restrict your losses, because I provide stop losses, and I give you fair, reasonable targets so that you can make money. So before jumping into trading, I hope you have some basic knowledge about stock market trading, and you have already taken consultation with your financial advisor. So another thing very important, I can tell you, whatever trade I suggest usually are those which have very big volumes. So even if I have any trade in that particular stock or index, it doesn't matter how many quantity I am having, that will never give any impact on the share price movement. So you will rest assured with that part at least. So about the program, I'll speak later. First, I'll share you today's levels. So today our highest level is Nifty is 18,360, and this week's highest level is 18,350. So this is the area where we are going to find very strong resistance, and this is the zone where we should definitely go for profit booking. So if we go today, we have made a gap down opening, and it is very good thing that we opened somewhere near our lowest level. So my friends who are already associated, who are already joining my program, they know how to trade my levels. I keep sharing them, and this Saturday, and so I have made another initiative from this Saturday. I will start taking a session which will guide you simple ways how to take trade and how to make money while trading in stock market. So once you know that, then it becomes very easy for you to follow whatever I share from Monday to Friday during market hours. So just give you an idea, whenever the market comes to the lowest level of our daily levels which I share, this becomes a very strong buy area, because usually this level is never not breached. 90% of the cases it has been seen that my levels are respected and they don't breach. So when we come to the lower end of the level, it becomes a buy opportunity, and we look for targets step by step. We keep on climbing. Once, suppose I give you an example, once suppose we have reached this level of 18,225, I can go for 18,250 then, but my trailing stop loss will be 18,200. And if we take a trade on this lower level, that is 18,155 to 18,180 zone, roughly 25 points we have to keep a stop loss. So 18,130 will become our stop loss if we take a buy trade at the lowest level. And if we keep on going up, so based on the difference of these levels, we have to keep our stop losses accordingly. Similarly, if we come to the highest level, this is a very strong resistance area, and profit booking is expected to come.
So we will book profit for the buy sides, and we can initiate a short trade as well. Same formula for stop loss. We will keep 25 points on the upper side. That is roughly, you can say 18,335. So 18,385. So 18,385 will become our stop loss if we take a short sell trade at this level, and we will go for the lower targets then, and we will keep trailing stop loss, and we will see how the market has performed today. So first, I will take you to my screen with respect to Nifty. Let us see how Nifty has done. So this is my screen. This is, I hope you can see, because some of my friends told me that the screen is at times it's not visible properly. I'll take you to a intraday chart, 5 minutes chart. So the first 5 minutes we saw a gap down opening. It made a low of 18,120, which is lower than our lowest level that I have given, but it took immediate support and it started clawing back. And the moment we came back to 18,155 level, that gives a very, very strong condition to buy. And whenever we buy this at this level, especially for the first 15 minutes candle, I will bring you. This is the first 15 minutes candle. Its high is 198 roughly. So we will get approximately 30 to 50 points depending on market conditions. For a day trader, 30 point is what more we can ask for. So 30 point will become 18 to 30. Let us see how the market has formed. So the highest level we saw is 18,228, 18,230, exactly 230. So we have achieved our short-term, intraday short-term daily morning targets within half an hour of opening. What more can you ask, friends? So this at this level, we either book profit or we go for our next level. Now let us come to Bank Nifty. So I'll share my screen again. This is Bank Nifty levels for today. The lowest level is 38,125. So let's see how it has performed. This is my software. I've come to Bank Nifty. Again, it opened just below. It came down below our lowest level, and the moment it has come up, we initiate a buy trade. At this point, we will get minimum 100 Bank Nifty points. So our level was, lowest level was 18,38,125, and we can see this is the lowest is 38,150. So even if we take a trade at 150, we add another 100 point, that is 18,250. Let us see the performance. This is 38,364. This was 150, this is 364. So we have got 200 points. So 200 points in Bank Nifty and roughly 30 to 40 points in Nifty. ज्यादा काम नहीं करना है, सुबह सुबह प्रॉफिट बुक करें, बंद करें और अपना दिन को एंजॉय करें. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ ट्रेड in our shared levels. So this is the beauty of whatever I share. Now let me come to next part. That is, we will try to search some very strong stocks which are performing today. Both on the buy side or a sell side, because as a trader, we are neither bullish nor bearish. We are with the market. So the way market gives us any indication, we will try to initiate a trade in that direction. So I will share my screen again, my software, and see whether any opportunity is coming. So whatever opportunity comes, there are two things you have to remember. Number one, you have to book profit at 1% or 2% profit from your buy or sell level. We don't have to be very greedy. So that is very important. Number two, whatever trade you take, by 11:30, because most of the momentum happens in the first hour. So by 11:30, it is suggested that you close the trade. And whenever I get next session of option, I will share again. But for the morning session, 11:30 is the last time you should close your trade. So let's go to the software once again. So this is, I'll take it the daily. So on this screen, I have made a setup where opening and low is same.
So when opening and low is same, and if we get some good momentum, we can easily go for a buy. Let's see how the performance has been so far. This I can see is Bosch, BOSCH Bosch. So Bosch, the open and low was at this point, open low was same. We always wait for first 15 minutes candle. The moment this first 15 minutes is over and it crosses on either side, then we take a trade. So this highest level was 17,570. So next 15 minutes we saw a good candle, and the best part is this candle also had a low and open as same. So this gives a more better condition to buy. Second good thing happened was previous day's high was 17,583 and it closed above this. So when it starts trading above this, that gives us, I'll take a 5 minute chart now. So the moment we cross this level, it becomes a very strong buy for me, and then I can take it safely. 17,582, I can round it off to 17,600, because whenever we take a trade, some points can be, you can say, we can miss out. So when we take 17,600, we add 175, that is 1%. So 17,600 plus 175 is 17,775. So let us see, the high is 17,819. So the moment you get 1% profit, you have two things to do. You book profit, enjoy your day. Second, you can go for higher profit, but then you have to keep trailing your stop losses. So what is trailing stop loss? The previous 5 minutes candle, whatever is the low, that becomes our trailing stop loss. In this case, our low is our buy point, because once we have taken a trade and we are in profit, usually we don't come in loss. So we never see losses, and if we see that our price movement is coming below our buy price, then we exit at buy price or we keep on riding. In this case, the next candle happened here. The low is 17,692. So till it is above 7,692, I will keep my positions intact, or I will book profit and enjoy, because my 1% target is achieved. So in this case, two things have happened. One, we may have booked profit. Second, so far our stop loss is not hit, so we are still holding on to it. Even if our stop loss is hit, it will be 17,690. You will have to give your stop loss on your trading terminal. So if you book at 690, again we entered at 600, so 90 points you have still got it. So there is no harm in it, and the lot size for this Bosch is 50. So 50, if you get 100 points, it's 5,000 rupees. What more can you ask for, friends? Now I can see there's another opportunity coming, a very good opportunity, that is the NBCC. NBCC, I have two signals I have generated. One is open low is same, and second is the bullish momentum. So let me check the stop. Yes. So this is the opening. Luckily, open is a very small candle, and this is open and low is a perfect Muruguzu candle. So this gives me very good. It's a fair idea. I can take that. We can go for a long. So the high was 51.40. So for 51.90. So the moment it goes up to 51.90, it is a buy for me. And previous day's high is this one, that is 52.25. So above 52.25, it gives me all the more reason to buy. So even if I have taken a trade here, my stop loss, it will be low of this first. Now today's low will be the low. To make it very simple, because from any software on your mobile, if you check, you can get the data. So the today's low is 51.40. With this, we can keep buying. Let us say you have entered at 52 rupees. So okay, fine. Let us see how it's happening. So it's already 52.50. That means you have 52 rupees, 55%. That means 1% is achieved. You have again two choice, either you book profit or you can continue, because this has just come up its previous day's high.
So now our trading stop loss will become 51 rupees 90 paisa our entry price, and we can continue holding on to this stock. Third stock which has come to my radar is Larsen and Toubro, LNT. LNT open low was not same. I'm just showing you different how different trade opportunities are coming. Open low was not same, but that follow up 15 minutes I saw a good momentum coming up. Number two, previous day's high is also breached. So I initiate a trade above previous day's high. This is my second type of trade. So 2032 is my entry price, and 1% target will be 2055 approximately. So far it is 2042. It is going good. Keep on riding for your next target or till your stop loss is hit automatically. Our success rate is approximately 70%. So this means if you take 10 trades, 7 trades will work, 3 stop losses will be hit. So 7 minus 3 net profit will be for 4 trades. So you will be at net profit level. So this gives a fair trading idea for any novice trader who doesn't have any technical knowledge or any expertise in stock market trading. You can just come every morning. I will join you. 9:30 I will start, because the first momentum I wait for 15 minutes. Then I start giving my views. So after 9:15, my views I keep this momentum. By 10, my videos will be shared to you. I'm trying to make it live so that from Monday you can join me live on YouTube instead of following this recording version, and you can take trade immediately. So my idea is अब इंडिया ट्रेड करेगा इजीली, तो हम आपको सिखाते भी रहेंगे, अपनी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी देते भी रहेंगे। उसका फायदा आप कैसे उठाते हो ये आपको देखना है, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आइए दोस्तों, इस बीच में एक और स्टॉक आ रहा है, यूनाइटेड ब्रूअरीज UBL। Gap down opening, but open low is same. Momentum is good. It has crossed previous day's high. So मेरा ट्रेडिंग का एंट्री पॉइंट बन गया। पहला 15 मिनट का हाई था 1667। सो 1667 के ऊपर मेरा ट्रेडिंग बनता था, लेकिन प्रीवियस डे हाई बहुत नजदीक है, तो ये हमारा नजदीक बनता है 1672। तो 1672 भी हम एंट्री ले सकते हैं। अभी 1670 है, मेरे लिए बहुत सही है, आई कैन गो फॉर इट। पिछले दिन का लो मेरा है 1626। इस केस में मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा या तो 1626 का, या मेरा आज का न्यूट्रल जोन है, जो बहुत छोटे लॉस देखने वाले ट्रेडर है वो 1657 का भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। आपको सॉफ्टवेयर इसी कारणों से हेल्प करता है। अभी जैसे हम देख रहे हैं, शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हो जाने दो। स्टॉप लॉस इज हैप्पी लॉस, क्योंकि हमने बहुत छोटे से लॉस में अपना सौदा को निकाल दिया है। रीजनिंग है, यदि इसके नीचे आ गया एक बार तो यहां तक भी आएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो हम यहां तक इंतजार क्यों करें? इट इज बेटर जब यहां आ जाता है और हमको नेक्स्ट रिवर्सल मिलता है, यानी ये रेड कैंडल हो गया नीचे गिरने का साइन, ग्रीन हो गया ऊपर का साइन। तो जब हमारे रेड के बाद ग्रीन का फॉलोअप कैंडल मिलेगा और रेड के हाई के ऊपर निकल जाएगा, तो हम इसमें बाई इनिशिएट करेंगे। मैं आपको जल्दी से एक और स्क्रीन पे ले जाता हूं जो आपको थोड़ा सा शायद हेल्प कर दे। लेट मी चेक। सॉरी, अभी दिखाई नहीं, मैं आपको नाम बता देता हूं। आप मोबाइल एप्लीकेशन में मार्केट पल्स बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको लाइव चार्ट्स का फ्री वर्जन मिलता है, बेसिक फ्री वर्जन। आपको इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे लगाने के लिए। आपको इंडिकेटर्स क्यों चाहिए? हम है ना आपके साथ में, तो हमारे साथ में लगे हैं, आप इसको देखें और इसके हिसाब से सौदा ले। आपको सिर्फ कैंडल्स का मूवमेंट देखना है, उसके लिए मार्केट पल्स बेस्ट है। और जो लोग उसको लेना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर को ले भी सकते हैं। उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है, रफली जीएसटी मिला के 1200 रुपया सालाना है, एनुअल है, और आप उसको फुल्ली यूज कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को मुझे फटाफट पैकअप करना होगा, नहीं तो सारे मौके जो मैं शेयर कर रहा हूं वो मिस हो जाएंगे आपसे। अगला मौका पीएफसी 15 मिनट का क्लोज ऊपर जा चुका है, तो मेरे लिए बाई बन चुका है। हम यहां भी बाई कर सकते हैं। अभी जिस जगह चल रहा है 128 पे, और हम चाहे तो प्रीवियस डे का हाई के बाद करेंगे तो और कंफर्मेशन आ जाएगा।
तो मेरे को 129 के ऊपर बाई करेंगे, तो ये आपको मौका दे सकता है आने वाले से। मैकडॉवेल अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ऊपर निकाल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, राइड करिए इसको दोस्तों। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम ज्यादा नहीं दिखाना चाहेंगे इसके अंदर। मीनवाइल एक बार देखते हैं, कुछ एक सेल साइड का ट्रेंड भी देख लेते हैं। ये हमारे सामने आया है मदरसन सुमी का एक चार्ट। तो मदरसन सुमी देख रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग है, लेकिन इसमें शायद कोई दूसरा चक्कर है, इसलिए हम इसमें इतना दिमाग इस समय नहीं लगाना चाहेंगे। कल इसका सुनते हैं कि ये कुछ इसका चेंजेस कुछ हुआ है इसके ट्रेडिंग के इस चीजों में, तो इस कारण से शायद लगता है एक बार ये सेल करके इसको दूसरा प्राइस एडजस्टमेंट होकर शायद ये आया है, तो इसलिए इसको हम देखते हैं। अब मेरे लिए क्योंकि नीचे आ चुका है, अब इसका लो है 188.95, सो इसके नीचे जाएगा तो हमारे सेल बनेगा, और इस कैंडल का हाई है 195.65, तो इसके ऊपर जाएगा तो ही मेरे लिए बाई बनेगा। फिलहाल कमजोरी दिखा रहा है, तो हमारे डिस्कशन में ये नहीं रहेगा। ये हमारे पास यूपीएल है। यूपीएल का जो है अब देखिए इसमें बहुत टेक्निकल चीजें है, तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इसका काम हो चुका है नीचे गिरने का। अब जैसे यूपीएल 830 के ऊपर अभी आ चुका है और इसके ऊपर जाता है और हमारे लिए ये 833 के ऊपर चला गया, तो हम फिर बाई कर लेंगे। फिलहाल 15 मिनट कैंडल के नीचे है तो कमजोर है, तो मेरे लिए आज के लिए ये सब जो सब मैं बता रहा हूँ सिर्फ सेम डे का होता है। आज के लिए मेरे लिए ये कमजोरी का संकेत है, तो यहाँ पर मेरा बाई तो इस समय नहीं बंद करने की हिम्मत है, लेकिन जो शॉर्ट सेल का नीचे है वो कर सकते हैं। उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो है हाई दैट इज 833, उसके हाई से आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। इस कमजोर बाजार में भी अच्छे मौके हैं, क्योंकि हम लोग इनहेरेंटली बुल मार्केट के अंदर है, तो हर गिरावट में हमारे लिए बाई अपॉर्चुनिटी है, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आया है इंडिया सीमेंट्स के अंदर में। इसका 15 मिनट का कैंडल के ऊपर चला गया, 2% की चाल तो ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी अभी निकल गया है, तो इसमें दिन के अंदर और चाल मिलने की संभावना है, तो इसमें अपने राइड कर सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर सेम, ये बहुत बढ़िया ट्रेड निकल के आया है, 15 मिनट का कैंडल के ऊपर भी है और प्रीवियस डे का हाई के ऊपर भी जस्ट गया है, तो इसको आप आराम से पोजीशन बना सकते हैं। आप सिस्टम को समझ चुके होंगे। अब इस वीडियो को हमको यहीं पर ही हमको समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अब इसको करने से पहले, वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे शेयर कर लेता हूं हमारे जो प्रोग्राम्स के बारे में। कहाँ गया ये शो और विंडोज, यस, ये हमारा जो प्रोग्राम है अबाउट अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। हमारा यहाँ पे 3 तरह का प्रोग्राम चलता है। एक, हम ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं ट्रेड कैसे बनाना है, और सौदे उनका शेयर करते हैं जिससे वो रोज कंसिस्टेंटली नेट में प्रॉफिट कमा सके। ये हमारे जो प्रोग्राम है इसका नाम है अनलॉक प्रीमियम, अनलॉक ट्रेडिंग आइडियाज। इसके अंदर आप कमाते हैं। सेकंड हमारा है अनलॉक प्रीमियम इन्वेस्टमेंट आइडियाज। ये हमारा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जहां पे जिनको डेली का नहीं झमेला देखना है, जिनको चाहिए कि उनका इन्वेस्टमेंट का उनको अच्छे आइडियाज मिल जाए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, जिससे वेल्थ क्रिएशन कर सके, तो हम इसके अंदर आपको आइडिया, स्टॉक आइडिया शेयर करते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। हर महीने हम इसका रिव्यू करके आपको शेयर करते हैं कि इसको रखना है या उसको पोर्टफोलियो से आउट करके दूसरों को इन लेना है। उसी तरह से हमारा तीसरा लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम है, दैट इज अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस। इसमें मैं हर मंडे मॉर्निंग आपको एक वीडियो देता हूं जो थोड़ा बड़ा रहता है, क्योंकि लर्निंग का प्रोग्राम है तो उसमें टाइम तो देना पड़ेगा। तो उसमें पिछले हफ्ते कैसे मार्केट में काम किया हम उसके बारे में बताते हैं। पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस करते हैं, वर्ल्ड के मार्केट्स ने कैसे काम किया, बहुत सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं, हमारे डॉलर इंडेक्स को भी एनालिसिस करते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह कैसे काम कर रहा है, हमारे मार्केट में कैसे काम किया है, मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है जो इम्पैक्ट कर सकती है हमारे मार्केट मूवमेंट को, और इन सबको हम कंबाइन करने के बाद में एक व्यू बनाते हैं कि आने वाला हफ्ता में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, और मैं मेरा व्यू देता हूं कि उनमें से कौन सा पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा है। सो बेस्ड ऑन दीज 3 प्रोग्राम्स, जैसा जिसको सूट करता है वो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए हमारा जो है
ये फ्रंट पेज एप्लीकेशन एक है, ये आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड में भी है और आपके पास आईफोन पे भी है। वहां जा करके आप इसमें अपने आप को रजिस्टर कर ले और वहां सर्च करें अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। वहां जाने से हमारे तीनों प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, उनमें आप जाके जो जो जिसको प्लान समझ में आए वो कर सकते हैं। और आप यदि करते हैं तो आपका फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं करते तो भी आपका फायदा होगा। हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए। हमको आप YouTube के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मंडे आपका ये आज की मॉर्निंग सेशन हमारा शुरुआत हो चुका है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इमर्ज किए हैं, आपने एक सौदा भी ले लिया, आपका काम हो गया। रोज के 10,000 कमाने हैं पर लॉट का, पर ट्रेड का, ये एक उद्देश्य लेके चलिए। अब जिनका जैसा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, जिनके कैपिटल का साइज जैसा है, वो उसके आपसे सौदा बनाएंगे तो लोग रोज का लाखों भी कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग फ्राइडे। थैंक यू एंड सी यू बैक ऑन मंडे मॉर्निंग।